images that are coming in from the mayoral elections that are happening in the Delhi Municipal Corporation. Complete ruckus over there. Sloganeering that is taking place. The elections for the post of mayor, deputy mayor, and in fact standing committee members are to happen today. Ram Kinkar is joining us over the phone line. Ram, tell us what's happening. As you can see, results are below councillors are shouting stable abuse presiding officer. In the presiding officer is the decision what for nominated members is taking place, and after listening to this decision of presiding officer, all elected members of Aam Aadmi Party will that why it is going to happen because now the individual is over. So that's why you can see that they came in rain and they have shouted against the municipal secretary and municipal corporation of Delhi. And you can see how this kind of people having here. And they are shouting slogans especially the nominated members. Because sometimes those who see the nominated Okay, so absolute ruckus over there, as you can see. Sloganeering which is happening at the moment. These are images that are happening around, of course, the elections for the posts of mayor, deputy mayor and other members of the standing committee, which is in fact to take place today. But those images coming in from the MCD, in fact, in Delhi, and complete scenes of chaos over there where slogans are being raised and both sides, specifically the Aam Aadmi Party and the BJP, raising slogans against each other. You can see that there are police personnel also who are present over there trying to intervene and ensure that the situation doesn't get out of hand. Marshals have been brought in as well, but heavy sloganeering which is taking place at the moment as we see from those images. Remember that earlier, during the elections, the Aam Aadmi Party had won the elections, but the BJP, of course, trying to ensure that they're still able to somehow hoist their leaders in the top positions for these elections. My colleague Ram Kinkar is in fact reporting on these developments. Ram, we lost the line with you earlier. Go ahead and tell us what's happening. You can see how the elected council of Aam Aadmi Party and other independent parties are creating slogans against the decision of presiding officer Satya Sharma when she has taken the decision that the first oath of nominated councillors, which is nominated by Delhi LG, will take place. And after listening this decision, the Aam Aadmi Party elected members start coming into bail, and they have moving, and it has been more than 16 minutes. You can see. So that is basically Aam Aadmi Party councillors who are in fact raising slogans at the moment. They are objecting to the decision which has been taken by the chair to in fact deliver the oath to the first 10 nominated members. But you can see how it has now turned into a scuffle in those images. Scenes over there from sloganeering and ruckus, now scuffle breaking out between the elected councillors
of the MCD. The police has been brought in. They're trying to step into the situation and try and contain the crowd. The officials also of the corporation are present over there. But you see those images, absolutely shameful images coming in from the NCD at the moment. It's a crucial day as far as the MCD is concerned. Remember, it was a hotly contested election between the Aam Aadmi Party and the BJP, where the Aam Aadmi Party in fact won over the BJP and was able to oust the BJP out of power after 15 long years. But here you can see what the scenes are like. This is going to be an extremely crucial day. Let's listen in. My colleague Ashu Mishra is now joining me over the phone line. Ashutosh, take us through those visuals that we're seeing at the moment. Absolutely shameful visuals of complete ruckus, sloganeering and a scuffle breaking out as well. Follow me, it was bound to happen, and the script was already written in last 48 hours because this is totally against the provision and the tradition that has been happening with MCD. The first, the government was bypassed, and the elder members were nominated directly by the LG as the accused by Aam Aadmi Party. Secondly, every time when the new mayor takes oath or the councillor takes oath, first oath is already given first always to the elected representatives and not the nominated. So here, when the presiding officer was taken oath, immediately it was announced that first oath will be taken only by the nominated members and not the elected representatives. So clearly here, the elected representatives were bypassed and first priority was given to the nominated members by the LG in the NCD. And that led to the trigger point where the Aam Aadmi Party, all the elected councillors started protesting, outraging against the decision, and now they are, shouting slogans that first priority should only be given to the elected representatives to take oath because they contested the election, and it is the LG who bypassed the government, going against the tradition, nominated the elder members in the NCD. In fact, there have been also blunders when the LG nominated. He first nominated in the first notification, 2 members were nominated who were not even part of the NCD zone. So clearly what has happened in last 48 hours, this is exactly the repercussion what you are saying, and the elected representatives of the Aam Aadmi Party protesting that first priority should be given to the elected representatives and not the nominated members in the MCD, because after unification this is really going to be a significant municipal body, particularly for the national capital, and hence the priority always goes to the elected representatives and not the nominated members. What is the protocol, Ashutosh? What is the tradition, the protocol? The protocol says when it comes to the NCD, always the members which are nominated, the names goes to the Union or UD Ministry of the Delhi government, where the government nominates people and then named governor. Here in this case, the nomination was directly done by LG. He bypassed the government and directly nominated. When it comes to the oath ceremony in the particular house, always the oath always taken by first the presiding officer, and then the oath is taken first by the elected representatives of house, regardless of any political party. When all members complete their oath ceremony, in fact, most of the cases we have seen in the previous cases that the nomination of these eldermen always way later than the existing members of the municipal corporator. Okay. So you can see those images at the moment, absolute mayhem and chaos inside the Delhi Municipal Corporation. This is happening as the chair, in fact, wanted to deliver the oath to the nominated members first. Harish Khurana, BJP leader, is over the phone line with us right now.
Absolutely unfortunate pictures that we're seeing, Mr. Khurana, from inside the MCD. AAP councillors, of course, objecting to the chair's decision to deliver the oath first to the nominated members. See, this is very unfortunate, and when a party who claims that they are in a majority and very confident of getting the mayor elected and himself are creating a ruckus in the house, this shows that they're in panic and they are underconfident that might be a cross-voting might happen. People who are in power never create a ruckus and never create a problem in the house. I don't understand. This shows the frustration of Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal's party councillors in the house, that they are thinking that the cross voting will be happening and something odd will be happen. This shows that their councillors are either bikau or for sale. I don't think so. If they are so much confident about that, let the proceeding happen. Let the council should take the oath and do an election of a mayor and deputy mayor and the standing committee. Why are they creating a problem? Okay, so you're saying that this is because the AAP is not confident about these elections and their position in these elections? This shows whatever they're creating a problem, they're creating a ruckus in the house. This shows that there is frustration right now. They are pretty sure about that they are losing a mayor as well as standing committee member elections. I mean, everything has been done constitutionally. Lieutenant Governor has a full right to appoint the appointed councillors, and still they are claiming that they're in majority. Why are they getting a problem then? Let the proceeding should happen. Let the oath should take place, and then election should happen now. They're creating a ruckus before. For the first time, we are seeing in the history of LCD that the procedure has started, and we are not taking even oath, and the ruckus has happened. I mean, oath to lene do yaar. First take the oath and then have an election then. So you're thinking that this is deliberate because the AAP is not very confident about their position in these elections, but why would that be the case? They have the majority, sir. I mean, Aam Aadmi Party should reply on this. I mean, as an opposition, we are not getting anything. We are not getting a problem in the house. Only Aam Aadmi Party councillors who are in power, who have got a majority, is getting a problem in the council. That Aam Aadmi Party should reply. Why are they underconfident? Why they are not? Why they're frustrated right now? Okay, Mr. Khurana, thank you so much for speaking to India Today. So that is the BJP's charge that the AAP is underconfident going into these very crucial mayor, deputy mayor elections, and that is why the AAP is deliberately creating this chaos. The AAP's objection, of course, is that why are nominated members being delivered the oath first, and that is why the ruckus in the Municipal Corporation. My colleague Ashutosh Mishra is joining me live at the moment. Ashutosh, again, for the benefit of our viewers, break it down for us. What exactly is happening? Why the chaos? Why the mayhem? Well, since we just heard the BJP leader Harish Khurana, what he made is absolutely a clear point politically. It was an interpretation that perhaps this is what the case. They fear their members can break away and then they could even lose election and this happen. But what is happening with? In a democratic tradition, when it comes to the MCD, what happens is usually the elder members, which are called the nominated members, 10 members always recommended, nominated by Delhi government. And this has been practiced for over the years and for many municipal elections. This has always been the case. Secondly, most of the time these elder members are even nominated after the MCD body is formed and the notification issued much later. This time what has happened, not only the elected government is bypassed by the Lieutenant Governor using the MCD and the UD department, they directly nominated the members. In fact, there has been a blunder, as I previously mentioned, that what LG nominated number of members, 2 or 3 of them were not even part of the municipal zone. And hence, there was a re-notification was issued by the LG, and that looks how, harshly this decision was taken by the Lieutenant Governor. Now, thirdly, and very important point, when it comes to the oath in the House, always the first oath priority is given to the elected members, elected representatives, because they elected let's just go to those pictures. Just see what's happening right now.
Well, what I see, this chaos is likely to continue unless this is settled, because the script was already written when this decision was taking place. And if you remember yesterday, Delhi Chief Minister shot a letter to the Lieutenant Governor calling this as undemocratic decision, and he should not nominate, rather he should withdraw the decision when it comes to the elected members, elected. The Municipal Corporation right now. This was expected that it would be heated. This contest would be heated between the two sides, the Aam Aadmi Party and the BJP. But those are AAP councillors right now objecting to the decision to in fact deliver the oath to the nominated members first. Listen in. Sirsa of the Bharatiya Janata Party is over the phone line with us right now. Sirsa ji, जो हम देख रहे हैं इस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये एक्सपेक्टेड था कि इतना ही हीटेड कॉन्टेस्ट होगा, पर क्या कहेंगे आप इन सीन्स के बारे में? कंप्लीट केओस, कंप्लीट मेहम। नहीं, बहुत दुखदाई है। मैं खुद भी निगम पार्षद रहा हूं। हमने पिछले 50 सालों में ऐसा नहीं देखा। बदकिस्मती है दिल्ली की कि जब जब आम आदमी पार्टी जिस भी हाउस में चुनकर जाती है, वहीं जाके इस तरह की गुंडागर्दी करती है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पार्टी के लोग हैं। कुछ जेलों में हैं और जो बाहर हैं जेलों से, वो किस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमें बहुत दुख है कि किस तरह छटपटा रहे हैं। ये एक पवित्र हाउस है जिसके अंदर एक इसकी गरिमा है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने गुंडे चुनकर भेजे हैं। ये निगम पार्षद कम और गुंडे ज्यादा हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर, और अपनी असलियत, अपना चेहरा जो है अब लोगों के सामने जग जाहिर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कहने में क्या करती है, दिखाने में क्या है, असली चेहरा उसका क्या है, बोलने में क्या और दिखने में क्या है। ये अंतर दोनों अभी स्पष्ट दिख रहा है। जिस हाउस में ये जाएंगे वहीं पे ऐसी गुंडागर्दी, ऐसा माहौल, गंदी लड़ाई झगड़े, आम आदमी पार्टी जहां जाती है वहीं ये हालात बना कर आती है। Mr. Sirsa, जो हम देख रहे हैं अभी, what we're witnessing right now within the Municipal Corporation House, the AAP's allegation is that this is all the BJP is doing. What's your response to that? Why BJP is doing? BJP तो निगम पार्षद में पिछले 15 साल से थी, उससे 10 साल कांग्रेस भी रही। कभी आपने किसी को इस तरह के हालातों में देखा है? कभी नहीं किसी ने भी किया इस तरह के। मैंने कहा, मैं खुद 2007 में निगम पार्षद रहा, 2002 से 2007 तक कांग्रेस थी, वहां पे फिर भी ऐसे झगड़े नहीं थे। बीजेपी थी, फिर भी ऐसे झगड़े नहीं थे। लेकिन जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है वहीं वहीं झगड़ा क्यों होता है? वहीं ये रक्स क्यों क्रिएट होता है? वहीं हाउस में मारपीट क्यों होती है? वहीं करप्शन की बातें क्यों सामने आती हैं? वहीं मंत्री जेलों में क्यों जाते हैं? वहीं एमएलए क्यों पकड़े जाते हैं? रोज दिल्ली पुलिस क्यों इन गुंडागर्दियों की, इनकी रोज गुंडागर्दियों पे मुकदमे दर्ज करती है? क्योंकि ये गुंडे हैं। आम आदमी पार्टी ने मवालियों को लाकर टिकटें दी हैं, पैसे से टिकटें बेची हैं, और जो टिकटें बेची हैं पैसे से, कौन लेगा टिकट पैसे से? जिसने बहुत धन दौलत गलत तरीके से कमाई होगी, गुंडागर्दी से कमाई होगी, उन लोगों को टिकट मिली है। अब जब उनको टिकट मिली है तो अपना असली रंग जाके दिखा रहे हैं निगम के अंदर। मिस्टर सिरसा, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू। आप ये कह रहा है कि एक अलायंस हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के साथ दिल्ली में, क्योंकि अगर आप देखोगे 9 काउंसिलर्स जो है कांग्रेस के, दे आर एब्सटेनिंग फ्रॉम दिस वोटिंग व्हिच इवेंचुअली बेनिफिट्स द बीजेपी। देखिए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों जंतर मंतर पे हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई, कस्में खा के, झूठी कस्में तोड़कर इन्होंने सरकार बनाई। इकट्ठे ये रहते हैं, सरकारें ये मिलकर बनाते हैं, हाथ में हाथ डालकर ये घूमते हैं और बताते हैं हमें हैं। अरे भाई, आपका साथ है उनके साथ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही तो हैं, एक दूसरे को वोट डलवाते हैं। आपने देखा गुजरात में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ। जैसे कांग्रेस ने कहा आम आदमी पार्टी को आप हिमाचल छोड़ दीजिए, हम गुजरात में आपकी सपोर्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी हिमाचल छोड़कर चले गई। तो ये इकट्ठे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। देश के अंदर सबसे बड़ी मजबूत पार्टी, और दिल्ली में भी आपने देखा
ये तो अरविंद केजरीवाल कहते तो इनको 20 सीटें नहीं आएंगी। कहाँ है झूठा आदमी? अब उससे कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा, झूठे आदमी से लिख कर दे रहा था। अब कहाँ है वो झूठा आदमी? ठीक है, okay, Manjinder Sirsa, thank you for joining us here on India Today. I'd like to bring in BJP councillor Yogesh Verma also on this broadcast. योगेश जी, क्या हो रहा है अभी म्युनिसिपल हाउस में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्लोगनियरिंग हो रहा है, केओस है आपके और आप वर्कर्स के बीच। देखिए, ऐसा था, सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जो हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी सत्या शर्मा जी को ओट दिलवाई गई। उसके बाद उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाना शुरू किया और उन्होंने आते ही कहा कि जितने भी मनोनीत पार्षद हैं और सभी पार्षदों को हम जो है शपथ शुरू करने वाले हैं। और उन्होंने एक एक करके मनोनीत पार्षदों को बुलाना शुरू किया। 2 लोगों ने शपथ ली थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद थे उन्होंने मंच के ऊपर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया, माइक तोड़ दिया, जाके पीठासीन अधिकारी को घेर लिया, कमिश्नर साहब को घेर लिया और उसके साथ साथ जितने भी लोग वहां खड़े थे वहां तो हो हल्ला और दंगा करना शुरू कर दिया। आज लगता है कि आम आदमी पार्टी की फूट उजागर हो चुकी है। उन्हें लगता है कि उनका मेयर जीत नहीं सकता, इसलिए वो नहीं चाहते कि सदन की कार्रवाई चले, इसीलिए उन्होंने आज ये हंगामा शुरू किया है। उस हंगामे के पीछे कारण बड़ा स्पष्ट है। आज उनके पार्षदों के अंदर जिस प्रकार से रोष है, जिस प्रकार से उनको कवरिंग कैंडिडेट भरना पड़ा और जिस प्रकार से उन्हें बार बार अपने पार्षदों को इकट्ठा करना पड़ रहा है, ये दर्शाता है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों का जो मैंडेट था और लोग नहीं चाहते कि उनका कोई मेयर बने और उनके पार्षदों के अंदर जो रोष वो आज निकल कर आया। आज वो हाउस में नहीं चलने दे रहे हमारा। लेकिन योगेश जी, अगर आप देखोगे कि आप क्या बोल रहे हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं कि अभी स्लोगनियरिंग हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, आप ये बोल रहे हैं कि जो मतलब सत्या शर्मा जो काउंसलर को अपॉइंट किया है एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो एक बायस्ड डिसीजन था। बिल्कुल भी बायस्ड डिसीजन नहीं था। देखिए, आज शपथ किस किस की है? आज शपथ है पार्षदों की, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो चयनित हो, जीत कर आए हो। तो अगर उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि 10 पार्षद केवल मनोनीत पार्षद है, उसके बाद 250 पार्षद जो कि जीत कर आए हैं, तो पहले उनकी शपथ इसलिए करवाएगी क्योंकि उनकी संख्या कम थी। उसके बाद लगातार हम लोग जो है 250 पार्षदों की संख्या जो थी, इसलिए उनकी वो करवाई गई शपथ। इसमें किस प्रकार का बायसनेस है? ये तो केवल उनका हंगामा करने के लिए उनको कोई ना कोई कारण चाहिए। ऐसे पिछले 5 वर्षों में भी उन्होंने इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई और सदन को नहीं चलने दिया। नहीं, लेकिन क्या सत्या शर्मा सीनियर मोस्ट मेंबर है हाउस में? सीनियर मोस्ट मेंबर है, वो 3 बार की पार्षद भी रह चुकी है और उसके साथ वो महापौर भी रह चुकी है। तो ऐसे में जब एलजी साहब ने अगर ये निर्णय लिया है, अगर इनको एलजी साहब के किसी निर्णय से अगर कोई ऐसी थी तो वो एलजी साहब से प्रोटेस्ट करते, लेकिन जब सदन की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है तो ऐसे में इस प्रकार का हंगामा करना ये दर्शाता है कि इनके पास आज संख्या नहीं है, संख्या बल नहीं है, इसीलिए वो आज चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई ना चले। एडजर्न करने के बाद भी वो हाउस को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, योगेश वर्मा जी, thank you for joining us here on India Today. So the BJP councillor maintaining that this is an attempt by the Aam Aadmi Party to not allow proceedings of the House to go on. But look at the visuals of the scenes that are playing out right now on your screens, viewers. This is from the Municipal Corporation House in the national capital today. You had, in fact, the key decision of the mayor being chosen. But the moment proceedings began, chaos, ruckus broke out. You can see all of, in fact, the councillors up on away from their seats, standing up. They're raising slogans, many of them staging a sit-down protest. They've got posters in their hands as well. Essentially, the Aam Aadmi Party is questioning the appointment of the presiding officer, and as soon as, in fact, the nominees were being called in to take oath to be sworn in, the ruckus and the protests began. And you can see many of them staging protests as well. Ashutosh Mishra is joining us with more details on this. Ashutosh, we've spoken to several BJP voices. They're maintaining that this is an attempt to disrupt proceedings of the House. But take us through what the AAP's basic contention is here. Point number 1, which are called the councillors and largely known as against the this municipal democratic tradition, that nomination of councillors, which are called aldermen, has always been done by the Delhi elected government through the UD department. This time the tradition has totally been changed, and Lieutenant Governor directly passed the UD department, the elected government, and issued the notification. And how hastily this decision was done, that you can even get to understand that the nomination, when the notification issued,
few members were nominated by the Lieutenant Governor who were not even part of that municipal zone, and then hastily there was another notification issued. So that was first. ये बिल्कुल गलत। बीजेपी का आरोप है कि आप सब आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो पहुंचे थे, उनका बीच में हंगामा हुआ। देखिए, अब सांसद संजय सिंह जो है वो अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए सदन की कार्रवाई को तस्वीर दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से सदन के अंदर। Okay, we play out that reaction for you from Satya Sharma, from the AAP MP there, who's also present, by the way, in the Municipal Corporation House. This is a key day for both parties. Interestingly, the Congress has chosen to abstain. They walked out almost as soon as the proceedings began. So this is largely a BJP versus AAP fight. And with the Congress walking out, that's something that will benefit the BJP. And right now, it doesn't look like any proceedings are going to happen because there's non-stop protests, as you see on your screens there. And it almost looks like the councillors were fully ready for this kind of a fight. They've got posters with them. They've got all sorts of, you see them holding up, brandishing clogs as well, and continuing the agitation. Shameful scenes that are being witnessed right now in the Municipal Corporation House, and unfortunately you're seeing this happen on a day which was supposed to be crucial for the national capital, on a day when the mayor was to be chosen. And here you have an attempt right now to ensure that there is no proceedings at all. The BJP is saying that this is AAP's doing, that they are the ones who are not allowing proceedings to continue. ये बेईमानी, जो एल्डरमैन बनते हैं, जिनको नॉमिनेटेड काउंसलर बोलते हैं, वो दिल्ली सरकार बनाती है, वो भी एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाती है, जो दूसरी बेईमानी है। और तीसरी और सबसे बड़ी बेईमानी अब वो ये कर रहे हैं कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ये जो मनोनीत पार्षद होते हैं, जो ये नॉमिनेटेड काउंसलर्स होते हैं, ये मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर चुने जाते हैं हाउस में, उसमें इनकी वोट नहीं है। ये डीएमसी एक्ट के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये वोट नहीं है। अब जबरदस्ती ये हो रही है कि ये कह रहे हैं कि साहब इनकी वोट करा के इनकी वोट डाली जाए, तो पूरी और पूरी बेईमानी है। अगर सौरभ भारद्वाज जी, जिस दिन ये खबर सामने आई थी, मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन यहां पर नतीजे निकल रहे थे, उस दिन भी बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था। हालांकि आप लोग कह रहे थे कि कानूनी पहलू पर सही नहीं है, वो कह रहे थे कि कानूनी पहलू पर सही है। तो अगर यहां पर वोट डलवाने की कोशिश होती है तो फिर आप लोग की तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बीजेपी तो उस दिन से कह रही है कि संवैधानिक है, ये कानून के दायरे में है। बेईमानी को रोकने का क्या कदम होता है? बेईमानी को रोका जाता है और फिर उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाया जाता है, कंप्लेंट की जाती है। मगर ये बेईमानी पे अगर कोई आदमी उतर आएगा, ना वो अपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, ना वो डीएमसी एक्ट को मानेगा, ना वो परंपराओं को मानेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो मतलब कि आप फिर लोगों को बताएंगे कि जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, ये जबरदस्ती चोर दरवाजे से उस सरकार को। नहीं तो क्या क्रॉस वोटिंग का भी आप लोग को डर है सर? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग जो रद्द होती नहीं है और कहा जाता है कि जो मनोनीत हैं, अगर उनके साथ कुछ क्रॉस वोटिंग हो गई तो खेल बदल सकता है। क्या इसी बात का आप लोग को अंदेशा और डर है? देखिए, अगर क्रॉस वोटिंग हो रही होती हमारी तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे ना उतरती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ये एक भी आदमी को खरीद नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसीलिए ये बेईमानी का रास्ता इन्होंने चुना कि भाई साहब अपने नॉमिनेटेड काउंसलर ले आएंगे, उनको वोट भी जबरदस्ती डलवा देंगे, अपनी ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा लेंगे। ये तो पूरी और पूरी बेईमानी, ये तो कभी जो है किसी हाउस के अंदर नहीं देखा गया जो इस तरह से देखा जा रहा है। और देश की राजधानी में ये बेईमानी हो रही है। अच्छा, सुबह ही लिख दिया, बाहर नोटिस लगा दिया कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद है। अब आप हाउस है जिसके अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करा दें कि आप जो है उसकी स्ट्रीमिंग बाहर नहीं देंगे कि अंदर क्या हो रहा है। ये इसका मतलब मंशा बेईमानी की पहले दिन से है, सुबह से है, और इन्होंने ये पूरी की पूरी बेईमानी करने का एक प्लान बनाया हुआ है। जी सौरभ जी, वैसे आंकड़े जो हैं वो तो अभी भी आपके पक्ष में हैं। अगर ये मनोनीत वाले हो भी जाते हैं, इसके बावजूद आंकड़े आपके पक्ष में जरूरी नंबर से ज्यादा है, तो फिर ऐसे में चिंता किस बात की है? ये संवैधानिक दायरा जो आप कह रहे हैं उसके विरोध को लेकर है ये प्रदर्शन, या फिर डर है कि मेरी कुर्सी को लेकर कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसा बीजेपी दावा कर रही है? डर नहीं, अब ऐसा है कि 2 प्लेयर कुश्ती के अंदर आ गए, ठीक है, एक प्लेयर छोड़ दूंगा और मैं तो जीतूंगा, और दूसरा आदमी कह रहता है कि भैया तुम इतने मजबूत हो तो मेरी हॉकी की टीम के अंदर दुगने सदस्य होंगे, मेरी टीम में डबल होंगे। अगर डबल होंगे सदस्य तो आप कहोगे कि साहब आप डर गए क्या इनके डबल सदस्यों से? अरे डबल क्यों हो गए?
भाई जो नियम है खेल के उसी नियम से खेला जाएगा ना, बेईमानी कोई ना की जाएगी। और दूसरा आदमी बेईमानी कर रहा है तो आप ये कहें कि नहीं साहब आप बेईमानी क्यों नहीं कर सके, इसका मतलब आप डर गए। अरे डर क्या गए, बेईमानी तो नहीं है। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, अब पाकिस्तान कहे कि जी हमारे 11 नहीं हमारे 31 प्लेयर खेलेंगे, और हम कहे कि भारत की टीम क्या डर गई इनसे, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। और देखिए Okay, so that was Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party. I want to now bring in Virender Sachdeva, who is the Delhi BJP working president. Virender ji, क्या हो रहा है अभी कॉर्पोरेशन हाउस में दिल्ली में? आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी ही ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने टीवी पे ध्यान से देखा होगा, जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने सुबह शपथ दिलाने के काम शुरू किया, इन आपके गुंडों ने वहां हंगामा करना शुरू किया और इन्होंने उस प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश की, तो उसके चलते वो हंगामा हुआ और सदन को एडजॉर्न करना पड़ा है। अगर ये सब नहीं करते, शपथ होती, सभी पार्षदों की शपथ होती, उसके बाद वोटिंग होती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सौरभ भारद्वाज को मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ, आज पहली बार उनकी भाषा में मुझे घबराहट और हताशा दिखाई दे रही है, जो सौरभ बाबू के लिए ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, आपने सौरभ भारद्वाज की बात भी सुन लिया। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी मैंडेट को चीट कर रहे हैं एमसीडी इलेक्शन में। आप मुझे बताइए, हमने तो अभी तो वोटिंग शुरू नहीं हुई ना। हमारे 105 पार्षद हैं, 10 मनोनीत पार्षद हैं, उसके बाद भी आंकड़े इनके पक्ष में है। अगर इनको डर नहीं है तो ये चिल्ला के हाउस को एडजॉर्न क्यों कराना चाहते हैं? ये बैठे ना वहां पर, उसमें पार्टिसिपेट करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लें। अगले 2-3 घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत ये है कि इनको मालूम है कि इन्होंने पैसे देके टिकटें बेची हैं, और वो जो लोग आए हैं वो इनकी गुंडागर्दी और इनकी हताशा से परेशान। उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी में सिस्टम क्या है, और इनको तो वहाँ पद बांटने के लिए, अगर मेयर के नॉमिनेशन के लिए 2-2 व्यक्ति आ रहे हैं, डिप्टी मेयर के नॉमिनेशन के लिए 2-2 फॉर्म आ रहे हैं, तो उसी दिन पता चल गया था कि आम आदमी पार्टी के अंदर फूट है, इनके पार्षदों में फूट है, जिसकी हताशा इनके चेहरे पर दिखाई देती है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, अगर आप देखोगे कि जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्य शर्मा की अपॉइंटमेंट के बारे में काफी चर्चा हो रहा है, आपका ये बोलना है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश कर रहे हैं अभी बीजेपी? नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ, सत्या शर्मा पहले दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं, उनको अनुभव है, और अगर उनको ये प्रेरोगेटिव तो एलजी साहब का है या जो भी कमिश्नर साहब का है कि किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, उसमें बीजेपी और आपका तो कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अगर अनुभव को तरजीह देकर बनाया है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है? उनका काम है पूरी व्यवस्था को चलाना, और व्यवस्था ये चलने नहीं दे रहे आम आदमी पार्टी के गुंडे। अगर ये चुपचाप वहां पार्टिसिपेशन करें उसमें प्रोसीडिंग में, तो अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कराने को तैयार है। तो अभी आपको क्या कहना है इस पूरे केओस और प्रोटेस्ट के बारे में? अभी क्या होगा दिल्ली में? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं, जनता है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों को हमको रूल करेंगे? देखिए, मैं अभी फिर आपसे कह रहा हूँ, हम लोग हाउस को चलाना चाहते हैं, हम लोग मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वो इस प्रोसीडिंग में हिस्सा ले। दिक्कत क्या है कि इस चुनाव में इनका 12% वोट गिरा है, भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट आगे बढ़ा है, और जो 12% वोट इनका कम हुआ है वो इनका फेलियर है। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया दिल्ली में वो सारी जनता को पता है, और फिर इसके अंदर जो इनकी आपस में टूट फूट है। वीरेंद्र जी, अगर हम एमसीडी इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपका ही जीत हुआ था ना? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, ये तो हमें 30 सीटें दे रहे थे। इनसे पूछिए ना, जनता ने 105 सीटें क्यों दी हमें? अगर ये इनके हिसाब से चलते तो हम तो 30 सीटों पर रुक रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने इनके भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। हम इलेक्शन में हमारी सीटें जरूर आई हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें स्वीकार किया, हमें आशीर्वाद दिया है। और फिर जितने पैसे लेके इन्होंने टिकटें बेची हैं, तो उन पार्षदों का भी तो स्वाभिमान जाग रहा है। उनको भी तो पता है कि उनको सेवा कहां से देनी। वीरेंद्र जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये पीपल्स मैंडेट है, क्योंकि अगर आप देखोगे, मनीष सिसोदिया ने अभी ही ट्वीट किया और बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों के डिसीजन, आदमी की डिसीजन, जनता के डिसीजन रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो क्यों ऐसे इलेक्शन रखते हैं? इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात करते हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेटेड काउंसिलर्स, पीपल्स इलेक्टेड काउंसिलर्स नॉट बीइंग स्वोर्न इन। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सिसोदिया बोल रहे हैं कि आप जनता के डिसीजन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि नॉमिनेट मेंबर्स इलीगल होते तो पिछले 5 साल में इन्होंने 30 मेंबर नॉमिनेट किए आम आदमी पार्टी ने, वो इलीगल नहीं थे, तब इनको समझ में नहीं आ रहा था। और जिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं, जिस दिन संसद में दिल्ली एकीकरण निगम का एक्ट पास हुआ था, तो उसमें जो संशोधन हुए थे वो मनीष सिसोदिया को भी पढ़ने चाहिए, सौरभ भारद्वाज को पढ़ने चाहिए।
उस संशोधन में साफ साफ लिखा है कि जहां जहां राज्य शब्द लिखा है उसको अब केंद्र सरकार पढ़ा जाए। तो केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हम दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल हैं, उनके फैसलों को स्वीकार करना चाहिए। वीरेंद्र जी, मेरी आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे हम देख रहे हैं इतने प्रोटेस्ट और ड्रामा और हंगामा हो रहा है, आपका यह कहना है कि जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद जो हुआ है उनके कपड़े फाड़े गए हैं और हिंसा किया है? ओके। पहली बार हम लोगों को सदन के अंदर शपथ लेनी थी जो इलेक्टेड मेंबर थे। आज बीजेपी ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए जो हमारे उनके नॉमिनेटेड काउंसलर थे उनको शपथ दिला रहे थे, तो हमने उनके ऊपर बात करके कि ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी से हमने बात की कि ये तरीका ठीक नहीं है, पहले इलेक्टेड जो मेंबर है उनको शपथ लेनी चाहिए। तो जितने भी पार्षद थे, वो जो मोमेंटो होता है जिससे शपथ लेनी होती है, उससे उन लोगों ने मेरे पर हमला किया, सभी पार्षदों ने, और वो कांच मेरे ऊपर लगा। उन्होंने सारे पार्षदों ने उसके बाद मेरे कपड़े फाड़े और मेरे साथ हाथापाई करी। उनके सांसद भी वहां साथ में थे, उन्होंने किसी को पार्षदों को एक बार भी ये नहीं बोला। देखिए किस तरीके से मतलब बहुत ये सीधा सीधा खूनी खेल है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता ने हरा दिया, बुरी तरीके से हार गए वो लोग, तो ये कर रहे हैं। आप देखिए ये कर रहे हैं। हमारे एक पार्षद का 2 बार से चुना हुआ ये पार्षद है, इसका खून बहा रहे हैं सदन के अंदर, मारपीट, कपड़े फाड़ रहे हैं। देखिए आप, और वहां बीजेपी के साथ साथ सांसद मौजूद हैं। यह हो रहा है। दिल्ली की जनता ने अगर बीजेपी को हरा दिया तो हमारे लोगों की जान लेंगे, हत्या कर देंगे इनकी। आप देखिए क्या हो रहा है इनके साथ। कहां है लोकतंत्र, कहां है कानून, कहां है व्यवस्था? सवाल ये हो रहा है कि जो पार्षद मनोनीत चुनकर के आए थे उनको शपथ जो है वो दिलाई जा रही थी, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पहले हंगामा शुरू किया। ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए ऐसा है कि कभी भी यहां नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ कराई ही नहीं गई। हंगामा क्या कर रहे थे भाई? जो चुने हुए पार्षद हैं शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माहौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले वोटिंग शपथ करा रहे थे कि उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया। सौरभ भारद्वाज भी हैं। सौरभ, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया संवैधानिक रूप से नहीं हो रहा था, इसको मानते हैं? देखिए, डीएमसी एक्ट के अंदर ये साफ प्रावधान है, नॉमिनेटेड काउंसलर हाउस के अंदर वोट नहीं डालता। आज एमसीडी के अफसरों के पास एलजी हाउस से मैसेज है कि एल्डरमैन जो कि नॉमिनेटेड काउंसलर है उनके वोट कराने हैं, जो कि असंवैधानिक है, बेईमानी है। और इस बेईमानी के चलते उन्होंने हमारे एक पार्षद को पीटा है, उसको खून निकल गया, उसको कांच से मारा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर गेम्स में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कहीं बीजेपी खेल कर रही है इस वजह से। अब देखिए, 2 टीमों में मैच है, इंडिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कहे कि हमारे क्रिकेट में 11 नहीं हमारे 22 खेलेंगे, और फिर आप इंडिया से पूछे कि भाई क्या आप डर रहे हैं? आप 22 को भी हरा दो, ऐसे तो फिर 33 को खिला लो। 23 बैट्समैन पाकिस्तान से खेलेंगे, हमारे 11 खेलेंगे, ऐसे कोई ना चलता है। जो नियम है, जो कानून है, उसी के हिसाब से होगी ना वोटिंग। चलिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि नियम के अनुसार जो है वो पूरी जो है वो प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था, लेकिन वो अपनाती हुई नजर नहीं आई, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने इस चीज का विरोध किया। लेकिन जिस तरीके से मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। Sushant Mehra getting us an exclusive report. You've got the Aam Aadmi Party alleging now that BJP workers in the floor resorted to violence. They're saying BJP corporators attacked them and they also in fact showed you that footage. Let's cut across live. हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद से जो चीजें हैं वो आपने देखा। मनोज तिवारी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो तरह हंगामा है आज शपथ के ही दिन, वो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जो पार्टी सत्ता में है
और जो पार्टी सदन में भी उसके नंबर अच्छे, उनके नंबर ज्यादा हैं, उसके बाद भी ये हालत, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराना, उसके बाद भी हल्ला गुल्ला करना, गुंडागर्दी करना, ये बिल्कुल ही आश्चर्य का विषय है। हमको लगता है कि वो मानसिक रूप से और नैतिक रूप से हार चुके हैं। हम सभी सांसद बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने एक निगम के सदन को इस तरह का अखाड़ा बना दिया है। लगातार गुंडागर्दी चल रही है, अंदर धक्का मुक्की चल रही है। मैं नहीं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी विश्वस्त है कि वो शायद जीत पाए। ऐसा लगता है उनके अंदर बहुत सारा डर है कि शायद उनके लोग ही उनके साथ न दें। ये बहुत ही दुखद स्थिति है और हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से मनोज तिवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो इसकी निंदा कर रहे हैं और शपथ के पहले दिन किस तरह से अखाड़ा बना दिया। जगन्नाथ के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली। So Manoj Tiwari pinning the blame on the AAP. This is a blame game that's clearly continuing. The Aam Aadmi Party even escalating this, saying that their councillors who were on the floor were targeted, that many of them have been violently and physically attacked by BJP rivals or on the floor of the house. Unfortunate what we're seeing right now, because these protests are continuing to escalate, which means that today proceedings cannot continue. The appointment of a mayor will not happen if it continues to go on like this. There's no way marshals also can control the situation, because you've got so many of these leaders there standing at the floor of the house, standing on their desks. They've broken the mic also of the presiding officer. And what led to all of this tension? Well, essentially it's because the Aam Aadmi Party is claiming that there's a clear bias that's playing out. That instead of the corporators, the councillors who were chosen by the people's representatives being sworn in first, the nominated ones were sworn in first. They're saying that there was a clear attempt by the BJP to boost their numbers and ensure that they can get their way of having a BJP mayor in Delhi. So as soon as the first two or so swearing-ins took place, immediately this hangama began. As AAP started protesting, it led to a it led to a war of words, it led to a showdown, which eventually even led to violence now in the Municipal Corporation House of the national capital. Unprecedented, unfortunate scenes that we're seeing right now. Massive uproar that's playing out. The Aam Aadmi Party claims that some of their representatives have also been violently targeted. We showed you images earlier of one such leader with his face swollen, and one part of his face also there was blood, and he was holding up a cloth and covering that up. Clothes torn off in this melee that's happened and broken out. This is a joke on us, the people, on every Delhiite who went out there to cast their vote. Look at what the representatives are doing now. At this rate, there's no way that the mayor appointment, the election, can actually happen today. And even as the sloganeering continues, you can see many of them sitting down there, standing on desks, holding up papers, clearly prepared. They knew they were going to resort to this kind of an agitation inside the house. And the BJP and the AAP are now resorting to a war of words, pinning blame on the other party for this hangama that we're seeing right now within the MCD house. Unfortunate really what we're seeing currently. And you know, this kind of, the fact that this is the first mayor polls for a unified MCD, it doesn't all go well for anyone in the national capital, because these are the people who apparently represent us. And look at what they're busy doing, protesting, resorting to politics and doing anything but really serving the people. And as we get you all of these images, let me also highlight right now that the cameras have been switched off, so live streaming for the longest time hasn't been available either. Ram Kinkar is joining us with more details on this. Ram, it's become a tutu meme right now in the MCD house. Take us through what's happening currently. It doesn't look like there'll be any proceedings today. Yes, all proceedings are in a standstill position, and right now you can see that outside of Civic Mukhyalaya, and you can find here that supporters of the BJP and are present here. They are shouting slogans against the CM of Delhi, Arvind Kejriwal, and they are saying that what they are looking in Delhi since 8 years, it will continue in Delhi Municipal Corporation, and that is why they are shouting slogan against the Kejriwal. I want to आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल का तो जितने भी निगम पार्षद है वो वहाँ पे
शपथ ग्रहण नहीं होने दिया, इसीलिए हम लोग हल्ला कर रहे हैं। ये तो उनका कहना था कि शपथ ग्रहण पहले मनोनीत का होना चाहिए। जो ये भी तो मनोनीत ही है, जो उनको जो होने देता तो ये टाइम तो नहीं खराब होता। अभी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं? ये जब तक ये नहीं होने देगा, जब तक केजरीवाल का जो पार्षद है, यदि जिस दिन तक नहीं होने देगा तब तक हम लोग हल्ला करते रहेंगे। So you listen it very well, and they are saying that we will continue protest outside of the Civic office till the oath of all councillors, including the BJP and nominated parshad, and all the row erupted between the house. You can see that when the presiding officer Satya Sharma has clearly said that first the oath will be of those who are nominated by Lieutenant Governor of Delhi, and then the AAP leader Mr. Mukesh Goyal already objected it, and after that you can see a lot of scuffle taken place between Aam Aadmi Party and BJP, and Aam Aadmi Party supporters, especially the councillors, also went into wail, and they gherawed the presiding officer, and after that you can see here that how this the totally changed environment you can see here, and that is why the BJP supporters also reaching here with the time, and they are saying will continue their protest till oath or all the office proceedings of the Municipal Corporation. यहाँ पर आप प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, अंदर ये शोर मचा रहे हैं, ये मुकेश गोयल वगैरह खाम का शोर मचा रहे हैं। जब मनोनीत जो पार्षद हैं उनकी शपथ ली जा रही थी तो वो क्यों रोक रहे थे? क्यों रोकने का कारण क्या था? वो कारण बताएं, तब जाके बात करें। कह रहे हैं जो पहले चुनकर आए उनका शपथ होना चाहिए बनिस्बत इसके कि जो बाद में आ रहे हैं। कम उसमें मात्रा में थे तो उन्होंने पहले कहा पहले इनको कर लो, बाकी जो 250 हैं बाद में कर लेंगे। आप वो शोर मचा रहे हैं, खाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक का। So it is also a matter of discussion that why the presiding officer has taken decision that the first nomination will take place of nominated councillors, not those who were elected from different constituencies, and that is why this is the main reason behind this. That the images that we're getting of the violence, the protests that have broken out within the house, which party representatives are these? Are these both parties, AAP and BJP, inside right now protesting? The eruption started over the who will take oath first, either the nominated members or those who were elected from different wards, and that is why, due to this reason, the first Aam Aadmi Party leader raises question over it, and after that those who were elected councillors from the different wards, they shouted slogans and they came into wail, and after that they raises question over the municipal corporation procedure, which was some times ago right now, but the situation or the environment outside the civic office, which was before some hours, it was totally a political kind of now of environment, but you can see here that how the supporters of both parties, especially the Aam Aadmi Party supporters, wants that this kind of tradition should not be allowed, because they are in par with the majority of the seats, and 134 seats they are having in the municipal. Apologies, we've lost the connection with Ram Kinkar. We'll go back to him. He's been covering the protests that have broken out now outside the NCD house. This is the situation inside. Outside too, the protests continue by BJP representatives who are questioning why the Aam Aadmi Party has stalled the proceedings. It's up to you, the viewer, to decide who's fair here. The Aam Aadmi Party is saying, why were nominated corporators, nominated councillors being sworn in before us, before the elected ones? And that's what led to this showdown. So they started staging protests. The BJP is alleging that AAP is afraid that they're losing the mayor battle, and that's why they're stalling the proceedings of the house. Either way you look at it, what's playing out on your screens right now is unfortunate, that this is what democracy in Delhi has come down to. This kind of sloganeering, this kind of protests and hangama that we're seeing right now within the MCD house, which means essentially you're not going to be seeing any mayor appointment happening today.
there's going to be no chance of any sort of democratic process actually being followed within the MCD house if this is the situation. We're getting you the latest updates coming in from the Municipal Corporation House in the national capital. You see these scenes that are currently playing out. You've got all of the representatives from political parties up on their stands, up on the desks, holding placards, raising slogans, ensuring that the showdown continues, and no matter what, the appointment of the mayor cannot happen within the house today. Looking at these scenes, let's cut across live now to Meenakshi Lekhi. डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। माना जाए कहीं ना कहीं उनको डर है जो मेयर का चुनाव है वो हारने का, या अपने ही जो काउंसलर्स हैं वो दूसरी तरफ वोट करेंगे, इस बात को उन्हें डर है। अब ऐसा लगता है कि इनको डर किस बात का है, इनको तो ये अलाउ करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये भी एक प्रक्रिया है ना कि वोटिंग का अधिकार सबके पास है और यहाँ पर वोटिंग का अधिकार सबके पास है और जाहिर तौर पे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके मन में कुछ खौफ है और खौफ से ज्यादा एनार्किस्ट प्रवृत्ति है। और एनार्किस्ट प्रवृत्ति में कि या सब कुछ जैसे मैं माई वे और हाईवे, और वो हाईवे वाली हरकत जो है वो आज दिखाई दे रही है। So that is the reaction that's coming in from Meenakshi Lekhi. The BJP alleging that this is the AAP resorting to these tactics to stop the proceedings of the House today because they know they're going to lose the mayor election. The Aam Aadmi Party on their part say that BJP is resorting to undemocratic practices to ensure that they get the edge. These protests, the violence even and the clashes within the corporation happened after the presiding officer chosen by the Lieutenant Governor, who by the way is a BJP councillor, she started in fact administering the oath first to the nominated representatives rather than those who've been elected in place, and that's why the Aam Aadmi Party immediately got up, started staging protests. Things escalated, things got heated up, leading to and culminating in the scenes that you see right now of the marshals all standing and watching as this drama plays out and unfolds right now. You can see almost two groups standing there raising slogans, holding up placards, arguing with each other, and at the end of the day, there's no way the proceedings can continue. जो करोड़ों रुपए लेकर अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने टिकट बेचे थे, जिस प्रकार से सिसोदिया के अपने इलाके में, सत्येंद्र जैन के अपने इलाके में, आतिशी के इलाके में सारे इनके निगम पार्षद हारे हैं और इनके अंदर की जो फूट है उसको छुपाने के लिए आज ये तमाशा किया जा रहा है। इस प्रकार तोड़फोड़ का माहौल दिल्ली के नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास का एक काला दिन है, एक शर्मनाक दिन है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सीखना होगा कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे चलाया जाता है, एक राजधानी का नगर निगम कैसे चलाया जाता है, ये उनको सीखना होगा। ये उनके पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है कि कोई भी मुंह खोलेगा उसको मारना शुरू कर दोगे, तोड़ना शुरू कर दोगे, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दोगे। ये मनोनीत सदस्य संविधान के द्वारा चुनकर वहां पर बैठे हुए हैं और आप वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको अपनी मेजॉरिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम का ये स्वरूप, इस प्रकार का नंगनाच कॉर्पोरेशन के अंदर, सदन के अंदर देश ने कभी नहीं देखा है। आज राजधानी का सिर शर्म से नीचा किया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने और ये गुंडागर्दी केजरीवाल और सिसोदिया के इशारे पे की जा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। उन्हें किस बात का डर है? ये वही बताएंगे। हो सकता है कि उन्होंने जो टिकट बेचे हैं करोड़ों रुपए के, उनके पार्षद अब उन्हीं से सवाल कर रहे हो, डील कर रहे हो सकता है उनको भरोसा ना हो कि उनके मेयर के लिए उनको वोट पड़ने वाले हैं। हमें नहीं पता कि उनको क्या डर है। नंबर के आधार पे उनके पास एक सिंपल मेजॉरिटी है, वो सदन चला सकते हैं, लेकिन पहले दिन अभी तो पार्षदों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। किस तरफ लेके जाना चाहते हैं दिल्ली को? कूड़े का पहाड़ अभी तक गाजीपुर में था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्षदों ने आज निगम को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है, सदन को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है। ये गंदगी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखी है।
Kapil Mishra there lashing out at the Aam Aadmi Party, saying that they knew they didn't have the numbers and so have resorted to these kind of actions. You've got the BJP firing an anarchy attack, saying that the Aam Aadmi Party has taken law into their own hands. My way or the highway was the message that came in from Meenakshi Lekhi when she targeted the Aam Aadmi Party. AAP on their part have even alleged that BJP resorted to violence, showing images of their leaders with their shirts torn off, with in fact blood on their faces, with their faces swollen up, alleging that the BJP has resorted to violence within the MCD house. Now what this will mean essentially, as you see this back and forth between the BJP and the AAP, is that it doesn't look like the mayor appointment is going to happen today. Remember that the Congress had already walked out of the house. They said that they're not going to be a part of the proceedings today, something that also benefited the BJP, because the Aam Aadmi Party alleged that there was some sort of a tacit understanding between the BJP and the Congress. You see on your screens there Atishi currently inside the MCD house. She's standing behind on those benches, trying to speak to, in fact, the AAP leaders. These are AAP representatives, councillors as well as MLAs who are all there for the voting, but who have instead resorted to this kind of an agitation, because they've alleged that the entire practice has been hijacked by the BJP, that it's undemocratic and unfair. And also they've alleged that the BJP is ensuring that they override people's mandate and ensure that there's a BJP mayor in the national capital. Let's cut across to reactions. डर और सदन को हंगामा करने के लिए गुंडागर्दी करना, ये आम आदमी पार्टी का गुंडागर्दी का चरित्र है. So that was Manoj Tiwari there. Reactions continuing to pour in from both the BJP and the Aam Aadmi Party. On the right of your screens are the images that the Aam Aadmi Party has shown us of their leaders who were inside the MCD house, who've been targeted according to them by BJP, who've been physically manhandled by the BJP is their allegation. And you can see that his clothes are torn, he suffered some injuries, his face is swollen, and according to the Aam Aadmi Party, all of this was the doing of the Bharatiya Janata Party. We'll see how this plays out, but for the moment, it looks like things are only going from bad to worse. Marshals struggling there to contain the situation. You can see that there's a lot of pushing and shoving within the house. There's chaos as many people are standing up on the desks. The latest image that we had was also of Atishi joining the agitation, going right up onto one of the benches and demanding, in fact, action, saying that all the steps that are being taken right now are undemocratic by the BJP. Where, in fact, the presiding officer was standing, the mic was broken off. People immediately gathered around her and started guerrilling her over swearing in the nominated members over the elected members first. यहाँ पे कांग्रेस की जो लीडर है नाजिया, उसको हज कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए आज ही बीजेपी ने एलजी के माध्यम से प्रस्ताव भिजवा दिया. मैं पूछना चाहता हूं उस नाजिया को 9 पार्षदों के लिए कितना पैसा मिला है? 50-50 लाख के हिसाब से 4.5 करोड़ की डील हुई है. इस प्रकार की जानकारी मिल रही है. ये हो क्या रहा है यहाँ पे? तो इसलिए इसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह से जिस तरह यहाँ सुबह से हंगामा हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत. बीजेपी का आरोप है कि हम सब सांसद भी हम दिल्ली के वोटर हैं मेयर के चुनाव में और हम अपना मतदान का अधिकार प्रयोग करने आए हैं. हम सभी हंसराज हंस जी, प्रवेश जी, गौतम जी, रमेश जी, ऊपर हर्षवर्धन जी भी हैं, मीनाक्षी जी भी हैं और हम सब अपने मतदान का प्रयोग करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेंगे. देखिए, मेयर के चुनाव के अंदर तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं, भाजपा के 104 हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्शन में मेयर जो है आम आदमी पार्टी की बनेगी, डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी के बनेंगे. एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है. आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं. जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है? और जब पीठासीन अधिकारी ने
नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी, और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर आरती मेहरा। जमकर हंगामा जो है वो सदन में हुआ है। मैम, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इस कार्रवाई को देखते हैं? बहुत अराजक, बहुत शर्मनाक। दिल्ली की जनता ने अभी प्यार से इन्हें चुन के भेजा है। ये 134 हैं और इनके विधायक और 3 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट मिला के इनके 151 होते हैं, हमारे 122 होते हैं। हमारे 10 नॉमिनेटेड मेंबर, जो हमारा राइट है, उनको भी आज शपथ दिलाना है। और शपथ दिलाने का अधिकार हमारी पीठासीन अधिकारी जो संवैधानिक तरीके से जिन्हें बिठाया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, उनका प्यूरोगेटिव है। वो पहले अपने एल्डरमैन को शपथ दिलाना चाहती हैं। ये अराजक हैं। मुझे लगता है ये अंदर से बहुत डरे हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि इनके अंदर कोई टूट फूट ना हो जाए। उस टूट फूट के डर से ये घबराए हुए हैं और ये हाउस को चलने नहीं दे रहे। नहीं तो शपथ जैसा पुण्य काम, मतलब जनता ने जो इन्हें अपना वोट दिया है उस पे मोहर तो फाइनली लगेगी ना जब ये शपथ ले लेंगे। और शपथ के पेपर फाड़ रहे हैं, माइक को तोड़ रहे हैं, खुद कहते हैं कि हाँ हम अनार्किस्ट हैं, लेकिन अनार्किज्म को रोज रोज डिस्प्ले करते हैं, सड़कों पे करते हैं। हर चीज कंझावला वाले कांड में, आप निर्भया कांड पे भी सड़क पे थे, अब कंझावला में जब आपको करना चाहिए कुछ तब भी आप सड़क पे हो, क्योंकि आपको सिर्फ दूसरे पे उंगली उठानी है, दूसरे पे प्रश्न करना है। हमारा राइट है, एलजी का राइट है पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने का। उन्होंने नॉमिनेट किया, अब वो अपनी तरफ से पहले 10 एल्डरमैन को दिलाना चाहती हैं, जिनमें से 4 को दिला चुकी हैं। तो इनको तकलीफ क्या है? आराम से, प्यार से ये प्रोसीजर हो जाने चाहिए। हम लोग 97 से मैं इलेक्टेड रही और 4 बार मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि इस तरह की गंदगी, इस तरह का तमाशा, इस तरह की वैशीपन की मेज पे आ गए और उन्हें। So those are all the reactions that are coming in, and as you can make out, it's essentially a he said, she said fight here between the BJP and the Aam Aadmi Party, both blaming the other for the violence that we're seeing right now. Unfortunate, terrible scenes to be seeing right now in the MCD House on a very crucial day, on a day when the mayor election was to happen. Look at what is really playing out of both sides, really. There will be questions asked of both the BJP and the AAP over what's happening right now in the MCD House. One thing's very clear, it doesn't look like the proceedings are going to happen today, and in the current scenario with the Aam Aadmi Party saying that the BJP is resorting to undemocratic practices and the BJP alleging that AAP is trying to stall the voting from taking place. As the jostling, the protests continue within the MCD House right now, you can see that there's no chance of anything beyond this actually playing out in the House. You can see, in fact, in the sequence on the left of your screens, how there was, in fact, violence that broke out, jostling and clashes, as a result of which the AAP leader on the right of your screen says that he was attacked physically by the BJP. We're going to continue tracking all the reactions that come in on this and the latest updates from the MCD House. Unfortunate scenes of violence, of clashes breaking out in the MCD House on a crucial day with